Hello everyone, this is Nidhi Mohan Kamal, nutritionist and fitness trainer, and welcome to this episode of Health Anusar. Today we'll be making a very simple vegan recipe. This is my favorite mug cake, which literally takes 5 minutes to make, and it's very healthy and very nutritious. So let's get straight into it. Let's first look at the ingredients that we need for the recipe. I'm keeping it very simple, so the ingredients you need for the recipe are easily available and I don't think you should have a problem finding them in these times. So this is rolled oats. This is 1 cup of rolled normal regular oats जो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे. शुगर की जगह मैं सब्सटीट्यूट यूज़ कर रही हूँ जैगरी पाउडर, मतलब ये है शक्कर, और दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हाउ एवर स्वीट यू लाइक. इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबल स्पून. अगर डेसिकेटेड कोकोनट आपको नहीं मिल रहा है फॉर वट एवर रीज़न, अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है वो भी चलेगा, ड्राइड कोकोनट है वो भी चलेगा. इसके साथ हम लोग को चाहिए होगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर. वी वुड नीड 1 लेमन. प्लांट बेस्ड मिल्क चाहिए होगा हमें कोई भी. अगर आपके पास सोया मिल्क है चलेगा. अगर आपके पास कोई भी मिल्क नहीं है तो आप घर में कैश्यू या आमंड मिल्क बना सकते हो, वो भी चलेगा. और कुछ नहीं है तो पानी से भी ये रेसिपी वैसी ही बनेगी, बट इट विल बी अ लिटिल हार्डर, बट अदरवाइज द केक वुड बी फाइन. यू वुड नीड 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, एंड अगर आपको चाहिए हो टेस्ट के लिए तो हम थोड़ा सा सिनेमन डाल सकते हैं. नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट टू मेकिंग इट. सो बनाना बहुत ही आसान है. सबसे पहले मैं एक बड़े बोल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही हूँ. सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ रोल्ड ओट्स. उसके साथ मैं इसमें डालूंगी सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स. सो नेक्स्ट गोज जैगरी एंड देन डेसिकेटेड कोकोनट, टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. इसको मैं कोर्सली मिक्स कर रही हूँ, एंड क्योंकि ये ओट्स का टेक्सचर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जो हमें नहीं चाहिए फाइनल प्रोडक्ट में, तो इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, एंड दैट्स द ओनली स्टेप दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. So I'm transferring the contents into a mixer for dry grinding. Once the mixture is out of the grinder, there is very little time you will have to mix all the wet ingredients together, because इस mixture को आप रख नहीं सकते हैं, because we are not using egg in it. So fluff करने के लिए जो बेकिंग सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उससे केक फ्लफी बनेगा, और अगर आप इसको रख दोगे थोड़ी देर के लिए तो it will go flat, which is something which we don't want. So let's make it quickly. So इस मिक्सचर में सबसे पहले मैं डालूंगी 1 चम्मच कोकोनट ऑयल. माई कोकोनट ऑयल इज़ ऑलरेडी फ्लेवर्ड विद सिनेमन. अगर आपको सिनेमन फ्लेवर पसंद है तो आप उसको सेपरेटली भी डाल सकते हैं. आई जस्ट हैपन टू हैव अ कोकोनट ऑयल दैट इज़ फ्लेवर्ड विद सिनेमन ऑलरेडी. आई एम गोना पुट 1 teaspoon of apple cider vinegar in this. Apple cider vinegar is a good replacement for egg in any vegan recipes, because it gives the same amount of fluff to it, so to speak. For this one I would be using the peel of the lemon as a flavor. So मैं इसको थोड़ा सा peel को grind कर रही हूँ, because इसके peel से जो एसेंशियल ऑयल निकलेगा वो मेरे केक को फ्लेवर देगा. सो आई एम गोना यूज दैट. आई थिंक दैट्स गुड इनफ. यप. एंड नाउ I'll use the same lemon and I'll squeeze the juice of this lemon. So it's like double flavored from the lemon. So you have your lemon coconut cake. There you go. And next we will put this is where we have to really rush up, so I'm gonna add my plant-based milk. I'm using soy milk. You can use anything else also. And as soon as I mix, I would notice that it starts bubbling up already, and at this stage I need to quickly transfer it to my final baking pan. Usually you can make it in a mug, but I'm using a bowl to do the same. अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहते हो या फिर you want to add more nutrition to it, you can sprinkle a few seeds on top, and this would go in the microwave for about 5 minutes, or if you have a conventional oven, in an oven for about
10 minutes at the temperature of 220 degrees. So let's pop it in the microwave. It's gonna go for 5 minutes. And when you take it out, don't forget to do the knife test. Pour yourself some nice coffee, a good book, and you are ready to enjoy the cake. So guys, I hope you like this recipe and you will give it a try. For more such recipes and content, keep logged in to Health Shots. Do like, share and subscribe. And till then, खूब खाओ मगर health अनुसार.